Hi, and welcome back to our show In Our Teens, a show that brings together parents, teenagers, and experts who help us understand the remarkable journey of teenage. In conversation with Simran Gill, an award winning wildlife filmmaker and an entrepreneur. आज हम बात करेंगे करियर्स इन वाइल्ड लाइफ वीडियोग्राफी. Simran, thank you for being with us today. Thank you for inviting me and having me on your show. I hope I'll be of some use to the teens of today. Definitely. Thank you for investing your time in us. Thank you so much. And how do you feel being on the other side? Being the interview? बहुत ही अजीब लग रहा है because all my life अभी कितना 16-17 years हो गया है और मैं हमेशा लोगों से सवाल पूछती हूँ और अभी पहली बार मेरे से कोई सवाल पूछने वाला है तो बहुत नर्वस भी हूँ और थोड़ा डिफरेंट है. वो जर्नलिस्ट यूजुअली होते हैं जो दूसरों को नर्वस करते हैं. या मेरे टाइम पे तो मैंने किया था काफ़ी लोगों को नर्वस, मुझे अभी तक याद है. So right now I'm nervous. So Simran, when I say journalism, what is the first thing that comes to your mind? So it's truth. That's the first thing that comes to my mind. And मैंने हमेशा अपना जर्नलिज्म करियर ऐसे ही किया है. जो भी मेरे स्टोरीज आता था, हमारे जो सोर्सेज होते हैं और हमें उनसे स्टोरीज मिलती हैं. सो ऑलवेज वन थिंग दैट आई वांटेड टू कीप इन माइंड इज दैट आई हैव टू रिपोर्ट इन ऑल ऑनेस्टी. जो सही है वो ही रिपोर्ट करो, जो फैक्ट्स है वो ही रिपोर्ट करो. बिकॉज एज जर्नलिस्ट हम भूल जाते हैं कि हमारा काम है सिर्फ न्यूज़ देना जो हमें पता चला है और हम अपना ओपिनियंस वगैरह डालना स्टार्ट कर देते हैं उसमें. सो आजकल तो वो डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो चुका है. सो मेरा जितना भी करियर था जर्नलिज्म में, मैंने हमेशा इसी बात पे फोकस रखा कि मेरे को बायसनेस नहीं लाना है और जो न्यूज़ है मुझे बस व्यूअर्स को बताना है. व्हेन अ जर्नलिस्ट एक स्टोरी रिपोर्ट करते हैं तो वो अपना पर्सपेक्टिव कितना होता है उसमें? सी जैसे मैंने बोला, आइडली तो हमें नहीं अपना कुछ भी ओपिनियंस डालना चाहिए. उसके अलग से ओपिनियन ओपेड पेजेस होते हैं न्यूज़पेपर्स में, प्लस अगर कोई एडिटर को कोई ओपिनियन देना है तो अलग से शोज हो सकते हैं. बट एज अ जर्नलिस्ट you have to be very factual and you have to be totally unbiased. Simran, as a woman on field, did you face any challenges which Okay. you probably think about them often? So of course हर प्रोफेशन में challenges तो होते हैं. स्ट्रेसफुल हो जाता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशन, ऊपर से फिजिकली ऑल्सो सम लिमिटेशंस आर देयर. बट जर्नलिज्म में स्ट्रेस तो बहुत होता था. तो बट आई वोंट से कि सिर्फ मेरे पे स्ट्रेस था. एवरीबडी, न्यूज़ रूम इतना स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एक न्यूज़ रूम की, बिकॉज यू आर ऑलवेज ऑन द गो, यू आर रनिंग, यू आर ट्राइंग टू गेट न्यूज़ अहेड ऑफ द अदर न्यूज़ चैनल्स, प्लस यू वांट टू बी देयर रिपोर्टिंग फर्स्ट. सो स्ट्रेस तो बहुत होता है. बट चैलेंजेस मेरे को पर से एज अ वुमन ज़्यादा नहीं थे, बिकॉज मोस्टली तो मेरा रिपोर्टिंग सारा सिटी में ही होता था. ऑफकोर्स सारा दिन आप बाहर हो, आप फील्ड में हो, समटाइम्स यू नॉट गेटिंग टू ड्रिंक इनफ वाटर, यू नॉट गेटिंग टू ईट योर मील्स ऑन टाइम, तो वो सारा इश्यूज हो जाता था. बट ओवरऑल फिजिकल चैलेंज, मेरी फैमिली भी मुझे बोलती है और मेरे एक्चुअली सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि आई एम मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग. फिजिकली मैं चाहे वीक लगती हूँ चाहे जो भी हो, पर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ. सो दैट वेज मेरे को कुछ भी चैलेंज कभी ऐसा फेस हुआ नहीं. सो if you think of that, maybe the timings go haywire, maybe it's too stressful. Otherwise, there's no such major challenge that you can face as a woman in a journalism profession. Simran, you've been in business news. Yeah. And the transition to wildlife. I'm so From happy. City life to wildlife. Yeah. You're not a teenager, but you took a teenage decision. No, not really a teenage decision. Actually, this is most of the parents complain that my teenager wanted to pursue one career and then suddenly switched. Yeah. So actually, you're right. उस वे में I think this is some like एक kind of confidence मिल सकता है लोगों को कि किसी भी एज में अगर आपको अपना करियर पाथ चेंज करना है, it's not impossible. सो मेरे साथ तो वही हुआ है. बट ऑनेस्टली, लाइक ऑन ऑनेस्टी, बचपन से मेरे को एनिमल्स से बहुत ज़्यादा
प्यार है, because my mom, she's the one who has shown me that passion and affection towards animals. मम्मा के पास तो even pigs होते थे. Forget like dogs and cats. उनके पास तो pigs भी होते थे. So I've always loved animals. और honestly, before trying to get into journalism, मेरे को वाइल्ड लाइफ में ही जाना था. मुझे अपना करियर वाइल्ड लाइफ में ही बनाना था. But then maybe God had some other plans for me. And or were you worried that it is not as a youngster that it is not a widely in those times? So in those times, yes, because I'm like pretty old now. So in those times, yes. Like when I did speak to my parents, I said कि मुझे wildlife में जाना है. तो पापा तो एकदम से like what are you going to do in wildlife? Are you mad? You can't go so close to animals. No, no, no. He just took it in another way. And my mother was like, do you think there is a career for wildlife at the moment? This I'm talking about in my 90s when I was in school. And then of course I also somewhere felt little underconfident कि maybe अगर मैंने बोल दिया कि like मैंने यही पाथ pursue किया और आगे जाके मुझे कुछ मिला नहीं तो मैं क्या करूँगी. So because of that dilemma मैंने journalism में चलेगी, because I love writing, I love talking to people, I love meeting people. So I knew कि journalism is something that I will be very interested in and I will do well. So then I took a path of journalism. And of course, you took a path of journalism means after college. What did yes, you so after college I did mass communication and then I was in XIC for my postgrad where I did journalism. Okay. So that is the path I took. And then you did an internship. No. My first job I got while I was on campus. Yes, on campus while I was in XIC. That's when I was offered my first job. And so that time also I was continuously. So this was in 2008. So by then I have become more confident that yes, there is scope for me to maybe get into wildlife. So when I was applying for jobs everywhere, I was still somewhere deep in my heart hoping कि शायद कोई wildlife का कुछ door खुल जाए कहीं पर. But then the first job that came to me was like a news channel that has not launched. वो अभी उसको लॉन्च करने वाले थे ET Now को. And so I was like this is a great opportunity to actually join a place जो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. And so I said let me just go for it. And in the back of my head I was like कि 2 साल करूँगी या मैक्स 3 साल करूँगी, कभी तो opportunity आएगा वाइल्ड लाइफ में. Till then let me do this. But I started enjoying journalism so much. Like वो जो भाग दौड़ है ना, वो जो भसड़ है, I started enjoying it. Okay. That stress I started enjoying. So then I just was like let me just go with the flow. And फिर 8 साल journalism किया. Then eventually but back of the head it was always like कोई तो कुछ opportunity दे दे वाइल्ड लाइफ में. So and I used to keep trying and like trying and helping people, NGOs who are doing something for wildlife or just trying to help people who want to make content in a different sphere which is not news. तो वो मेरा side by side चलता रहता था. Correct. And so one day then eventually my friend Nikhil Nagle, actually he's an ex-banker. He started his own NGO called the Last Wilderness Foundation where so he's a very passionate photographer. तो उसकी passion से उसने एक NGO start किया जहाँ पे वो खुद ही fully funded था, which does conservation for mainly focusing on tigers and all the people who live around the national parks. Correct. So it's not just about कि animals का देखो, also look at the people who are around the park because they end up being like the guardians for the park, right? So he reached out to me and said that I want to start an online channel for wildlife, like a YouTube channel, and would you be interested in helping me make content? मैं तो like literally it was like my heart skipped a beat and I was like are you even asking me this question? I've been waiting for this opportunity and I want to do it. So I grabbed it just like that and then I became the head for the channel and we named it Gypsy Tiger. Okay. Keeping in mind that Gypsy is the habitat connected to all the national parks में जो गाड़ियाँ हैं ना वो gypsy हैं. like that. और tiger तो हमारा national animal है. So connecting both of them, so Gypsy Tiger. हमने वो ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया एंड पर उसके पहले इट वाज नॉट सो इजी बिकॉज मैंने जर्नलिज्म जब छोड़ा उसके बाद मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया रन बाय 2 French guys called Delhi I Love You. They wanted to show the world that Delhi is not all about hatred. There are lots of good things also in Delhi. So we did a 3-year campaign. We did a lot of projects Delhi government के साथ join करके where we tried to tell the world that Delhi में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं. तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी कैमरा वर्क सीखा. So that was very important because
वाइल्ड लाइफ में ना लिटरली आप वन मैन आर्मी होते हो कभी. Correct. सो उस जॉब में मोर देन इवन माई जर्नलिज्म जॉब, मैंने वहाँ पे बहुत कैमरा वर्क देखा. मैं अपनी डीओपी के साथ जाती थी सब जगह, उससे सीखती थी फ्रेमिंग कैसे कर रहा है, कॉम्पोजिशन कैसे कर रहा है. तो दैट्स वेयर आई लर्नड मोस्ट ऑफ द थिंग्स. So that brings me to my question about equipment and technique. या ओके. That's what you learned on field. या सो यू नो जो वाइल्ड लाइफ है इट्स वेरी डिफरेंट. अभी जैसे आप शोज़ का शूट कर रहे हैं या आप कॉर्पोरेट फिल्म्स कर रहे हैं. मेरा अभी खुद का एक कंपनी है कॉल्ड फिल्म ट्रॉटस मीडिया. सो मैं दो काम करती हूँ. एक तरफ वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट्स लेती हूँ और एक तरफ मैं कॉर्पोरेट काम पिकअप करती हूँ. Because one is livelihood, one is passion. Yes, exactly. So corporates में we have to make corporate AV films, interviews करना होता है, lot of different stuff. Wildlife is completely different. So उस basis पे जो हम कैमराज भी यूज़ करते हैं या जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं. तो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ वाइल्ड लाइफ, कभी कभी होता है जैसे आई मीन आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. देयर आर लॉट्स ऑफ टाइम्स जब वाइल्ड लाइफ में ना बजट कम होता है बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सो देयर वर टाइम्स कि जब मेरा फ्रेंड बोलता था कि सिर्फ तुम जा सकती हो और एक और कैमरा पर्सन नहीं जा सकता है. इट यूज्ड टू हैपन मेनी टाइम्स. सो देन आई वाज दिस वन मैन army. So what I do, I take two camera bodies. So also I'm fortunate enough to be like the Canon maestro. So I've been using a lot of Canon cameras products all my life. And before I became a maestro, I was also using Canon. So I have that ease with that camera. So I take two camera bodies. मेरी lenses होती हैं कुछ जैसे wide lenses होती हैं and कुछ होती हैं telephoto lenses या zoom lenses. So आई मीन अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूँ, अगर आप वाइड लेंस लोगे तो जैसे एनिमल है और एनिमल के पीछे लैंडस्केप है, जैसे बहुत ही ब्यूटीफुल एक पोलर बेयर है. पोलर बेयर आइस के ऊपर खड़ा है, ओके, एंड पीछे इज जस्ट ब्लू वाटर एंड आइस ऑल अराउंड. सो टू गेट नॉट जस्ट द पोलर बेयर बट ऑल्सो दैट इंटायर फ्रेम, दैट ब्यूटीफुल नेचर, तो यू यूज अ वाइड लेंस. So you're getting that whole frame the way your eyes are seeing it, you know. And sometimes you want to like go closer to the polar bear. अब आप खुद तो जा नहीं सकते हैं closer to polar bear, he's going to attack you. So then you use your zoom or your telephoto lenses. So उसमें क्या होता है, you still at a distance, आप animal से दूर ही हैं, but you want to zoom into his maybe eyes, his face, कि अगर उसने कुछ अटैक किया हुआ है तो वो खा रहा है उसको. So then you use the zoom lenses. So it's a combination of wide and zoom lenses that I carry with me. And so like some of the lenses like in the market, like if you look at Canon has this cinema lens from 50 mm to 1000 mm. So आप सोच सकते हो कि 50 mm से 1000 कितना दूर तक staying in the same position I can just zoom into so much further away. So such kind of lenses you can carry. Of course they can be a little expensive, sometimes heavy. कभी कभी क्या होता है, वेट का बहुत इशू होता है. हम बोट में जाते हैं, बोट में सिर्फ 3 लोग अलाउड है, एक तो आपका बोट ड्राइवर ही है, एक मैं और एक मेरे साथ जो क्रू है. सो देन उसमें भी स्पेस का इशू हो जाता है. सो देन वी हैव टू चूज, कैन वी कैरी अ मोनोपॉड, सिर्फ गिम्बल यूज़ करें कि ट्राईपॉड यूज़ करें या हैंड हेल्ड जाएँ. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वाइल्ड लाइफ शूट में, स्पेशली इफ इट्स अ स्मॉल क्रू. बट कीपिंग इन माइंड कॉर्पोरेट, ऑफ कोर्स अगर आपको इंटरव्यूज करना है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लेंस. इट्स अ मोर कंट्रोल्ड स्पेस, इट्स मोर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. इट्स वेरी इजी. लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स फॉर मी दैट्स वेरी इजी. वाइल्ड लाइफ इज टफ. उसके लिए तो पहले से प्लानिंग करो, ये करो. कॉर्पोरेट, इफ टुडे यू टेल मी 3 दिन में शूट करना है, इट्स वेरी इजी, आई कैन ईजिली डू इट. सो डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, डिपेंड्स ऑन आप क्या शूट करने जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आपका इक्विपमेंट आप डिसाइड करते हैं. या ऐसा होता है. सो वी स्पोक ऑन अ प्रोफेशनल वे ऑफ हैविंग एन इक्विपमेंट. या most teenagers today are well equipped with smartphones. And also smartphones advertise in a way that, oh, you can shoot a film. Or usually, they have these competitions for the best picture that you've taken, photo of the day. Are smartphones really capable of, shouldering a film? See, that I don't think so. Of course, that's my personal view. But could it be an amateur? Yes, definitely. But suppose an amateur or somebody जिसका सिर्फ hobby है content बनाना. And you must have noticed there has been a boom in content making, especially after COVID. So because
people are sitting at home and they're like, "Abhi kya kare?" And everybody is either on And they're Instagram, doing well. yeah, or on YouTube, and people are doing really well. There are some of them I follow. They're so funny. They, just making you laugh. It's itself so difficult. So of course, so there I have seen that there is a boom in content making, not like it used to be before. अभी ऐसा confidence भी आ गया है where लोग कहते हैं कि मेरे को शायद बड़ा सिनेमा कैमरा का जरूरत नहीं है, मैं फोन से ही बना सकता हूँ. ऐसा है, but of course I belonging to that school of thought, I still believe that there are certain things that a phone can do, certain things that a phone cannot do. Right? And so, of course, but if it's somebody like even my own friends, yeah, like if they go to a national park, because I keep encouraging them, तो मेरे साथ काफ़ी लोग national park वगैरह जाते हैं इंडिया में. So they're always learning from me. अच्छा तो मुझे बता फोन से कैसे कर सकते हैं, कैसे मैं अपना फ्रेमिंग करूँ, कॉम्पोजिशन करूँ. So for somebody like who is an individual, जिसका who's not using it for commercial use or something, phone is a great use. Like even suppose he has his own Instagram or YouTube channel and he's just making content where he wants his followers to enjoy the content he's making, then phone is of great use. Of course these days you have that 5x zoom and 8x zoom, but of course abhi animal wildlife mein jaate hain to you can't go too close to the animal anyway, right? Out of course you it's not anyway safe for you, plus out of respect you have to respect nature, you be away from them. Yeah, don't enter in their space. So usme of course zyada aap zoom nahi kar sakte, some limitations are there. You must have noticed like जैसे I also have an iPhone, अगर थोड़ा excess zoom करूंगी तो वो फट जाती है image. Correct. So such kind of issues can be there, but definitely pixelate हो जाती है, is that? Yeah, pixelate हो जाती है. So such kind of issues are there, but definitely if you want to start making content, you can start from a phone. 100%. Start using your phone in different ways. अलग अलग compositions try करो उसमें, देखो कि आपका creatively आप कितना दूर जा सकते हैं phone के साथ. And eventually अगर उसको professionally आपको जाना ही है इस profession में, then you can move on to some cameras which are still not very expensive in the mid-range, then slowly you move up the ladder. Correct. That's how I started. Correct. Of course, I didn't start with a phone. I started with my small DSLR camera only. उसमें मैंने वीडियो बनाना शुरू किया. पहले तो वही था. Yes, वही से था. But it's not like कि मैं phone use नहीं करती हूँ. There are times कभी-कभी जब मैं अपना कैमरा साइड पे रख देती हूँ और मैं अपना phone पे शूट करती हूँ वाइड. या कभी-कभी आपको कुछ शॉट ऐसा मिल रहा है कि इक्विपमेंट है नहीं. Yes, वो उसमें काम आता है, because अभी आजकल phone भी 4K करते हैं. तो अगर आप वाइड पे यूज़ कर लेंगे, आपका ज़्यादा पिक्सलेट हो नहीं रही है इमेज, इट्स परफेक्टली फाइन. सो आई थिंक दैट फोन इज़ अ गुड वे टू स्टार्ट फॉर लॉट ऑफ पीपल हु आर स्टिल डिसाइडिंग कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है कि नहीं जाना है, या मुझे बस अपने लिए कंटेंट बनाना है, अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाना है. इट्स गुड. सिमरन, अभी तक हमने बात की कि शॉर्ट्स कैसे लेने हैं, क्या टेक्निक है, बट आई एम श्योर इन शॉर्ट्स को सजाना भी बहुत ज़रूरी है. एडिटिंग मैटर्स एज वेल. ओह, इट्स द टफेस्ट. So like I say that because that's where storytelling actually comes. So non-fiction ना थोड़ा अलग होता है fiction से. Like non-fiction में आप एकदम script नहीं हो सकती है आपकी, right? You have an idea कि मुझे ऐसे storyline है, and then you just write a basic structure and then you fill in the gaps. But so there's no script as a person to follow. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं ब्राज़ील गई थी एंड मैंने वहाँ पे बोला कि अभी मैं 2 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये हंट मिलेगा, जैगवार एनाकोंडा को किल कर देगा. एंड मैंने अपना सारा स्ट्रक्चर बना लिया, बिकॉज मैं पहले भी गई थी तो मुझे था कि इतना मिलेगा. पर वहाँ जाके नेचर गिव्स यू अ टाइट स्लैप, बिकॉज इट गिव्स यू टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू हैव एक्सपेक्टेड. सो देन व्हाट यू डू, you can't lose hope. You can't be like, yeah, मुझे कुछ मिला नहीं. Or come back empty-handed. And come back empty-handed. There is something that you will get. Then accordingly you change your story a bit. तो वो challenges होते हैं, वो issues होते हैं, especially when you've gone for a short time. There are times in wildlife to properly, जैसे आप planet वगैरह देखते हैं, they are not like a 2-week job. They are 1-year job or maybe longer than that. वहाँ पे एक story line है, वहाँ पे एक particular story उसको वो follow कर रहे हैं, and they're there. Right? So ऐसा हो जाता है. So basically, so they both work in a different way, fiction and non-fiction. So what happens is we get very greedy. अभी आपको पता है कि script नहीं है, सब कुछ unscripted है, आपने जाके वहाँ पे शॉर्ट्स पे शॉर्ट धड़ाधड़ आप शूट ही करते जा रहे हैं. ओके, तो शुरू में मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती थी, वेयर मैं काफ़ी ज़्यादा शूट कर लेती थी. फिर जब मेरे को वापस आके फुटेज देखना है और एडिट पे बैठना है, इट यूज्ड टू बी अ टास्क, अ बिग complicated task, because you have 100 shots and you want to make a video of like 5 minutes. Correct. And so much time used to get wasted. So through practice and through continuously
facing this problem, I started realizing it is so important to not just keep shooting, because nature में ना you get little tensed कि अरे अगर मैंने ये शूट नहीं किया, मेरा ये शॉट मिस हो गया, हाथ से निकल जाएगा. बट as you grow in this profession, as you shoot more and more, आपको वो confidence आना शुरू हो जाता है कि ठीक है, ये मेरी स्टोरी लाइन है, इस स्टोरी के बेसिस पे मुझे ये चाहिए, आई कैन नॉट शूट दिस मंकी जंपिंग अराउंड, इट्स ओके. शुरू में होता है कि थोड़ी स्टॉक फुटेज भी बन जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा फुटेज आ जाए, कहीं और यूज कर लिया. करेक्ट. तो अभी इतना सारा स्टॉक फुटेज लाइब्रेरी है मेरे पास. अब मैं जब जाती हूँ ना, सो लाइक अगर मैंने शॉर्ट लिस्ट बनाई है 30 शॉट्स की, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मैं 70 ले लूंगी, मैं 370 नहीं लूंगी. तो वो अभी थोड़ा आई स्टार्टेड कैलकुलेशन हो गया. कैलकुलेशन हो गया है ऑल्सो. एंड समटाइम्स देयर आर डेज व्हेन यू डोंट सी एनीथिंग. लाइक सपोज आप गए हैं पोलर बेयर का फिल्मिंग करने और वो पूरा दिन आप वेट कर रहे हैं, एक भी पोलर बेयर नहीं दिखा. इट्स नॉट लाइक अ जू एनीवेज, राइट? आपको वेट करना पड़ता है. तो उस दिन आप थोड़ा नेचर का शॉट्स ले लो, आप आपको जो बाकी वाइल्ड लाइफ दिख रहा है उसका ले लो. सो इट रियली हेल्प्स टू बिल्ड योर स्टोरी, बिकॉज योर स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट पोलर बेयर, इट्स अबाउट where the polar bear lives, showing the other wildlife. It helps build your story. So stock footage is also equally important. I'm not saying कि बस मत ही shoot करो. It is equally important, just like you have B-rolls. Also sometimes on the available footage do you tweak your story? कुछ और shoot करने चले थे, हाँ, कुछ और ही shoot हो गया. हाँ, वो तो बहुत बार होता है. वाइल्ड लाइफ में तो बहुत होता है ये, बिकॉज वहाँ पे तो यू डोंट हैव योर पोलर बेयर शूट करने एक्टर्स कुछ, हाँ, या कि वो आके वो बोलेंगे तो वो एक्शन एंड वो करके चले जाएंगे, वो तो ऑलरेडी वाला है. सो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट हैपन. हम पोलर बेयर शूट करने गए, कुछ और दिख गया, सो वहां से एक और स्टोरी मिल जाती है. सो इट्स नेवर अ डिसअपॉइंटमेंट. देयर इज समथिंग और द अदर ऑलवेज हैपनिंग इन वाइल्ड लाइफ. या ऑल्सो सिमरन, अभी आपने बताते बताया कि कुछ फुटेजेस एक साल भर की होती है. या स्टोरी बनाने के लिए आपको एक साल भर कुछ फुटेज शूट करना पड़ता है. तो पेशेंस एंड परसिवरेंस. या इफ यू डोंट हैव पेशेंस, प्लीज डोंट गेट इनटू वाइल्ड लाइफ. दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द टीम्स हु मे बी लुकिंग टू get into wildlife as a profession. Patience सबसे important चीज़ है. और my parents, they get so surprised because they think I'm very impatient. क्योंकि मैं जिस तरह से फटाफट बोलती हूँ जो भी हो, they think मैं बहुत impatient हूँ. So when जब मैंने उनको बोला मेरे को wildlife join करना है, they were like you won't survive even a month. तुम इतनी impatient हो, तुम्हें टाइगर नहीं दिखा तो तुम गुस्सा होकर आ जाओगी. So it taught me so much. Yes, the first few times used to be little more like to be honest little irritating, because आप 50 डिग्रीज है बाहर, इतनी गर्मी है और आप जिप्सी में बैठे हो. आपको अगर एक ट्री मिल गई जिसके अंडर आप शेड ले रहे हो, वेल एनफ, बट अगर विंड नहीं है तो हाउ इज इट एनीवेज गोइंग टू हेल्प यू. सो देयर यूज्ड टू बी डेज इन लाइक फॉर एग्जांपल इन रणथंबोर नेशनल पार्क, it was 52 degrees Celsius, and this was my first initial assignments. And what happened, we were waiting for one female tigress, her name is Arrowhead. एंड हमने, मेरे गाइड ने उसको देखा था, तो वो बोला कि वो तो रणथंबोर अगर आप जाओगे, इट्स सच अ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, वहाँ पे रूइन फोर्ट वगैरह है, तो वो रूइंस के अंदर टाइगर्स सो रहे होते हैं. इट्स अनदर कुछ और ही एक्सपीरियंस होता है उनको वैसे देखने के लिए. सो वहाँ पे सो रही थी, एंड मेरे को गाइड ने बोला कि अब ये पेशेंस का काम है. वो सो रही है पर वो 3-4 घंटे में उठी, बट फॉर 3-4 आवर्स यू हैव टू वेट. सो आई वाज लाइक हाँ नो प्रॉब्लम, वेट कर लेंगे, इसमें क्या है. एंड व्हेन दैट वेटिंग स्टार्टेड, इट स्टार्टेड गेटिंग annoying because इतनी गर्मी लग रही है. फिर there's some langurs troubling us, then water, we were falling short of water, but we didn't want to leave her because she could get up anytime. So that's when I started learning how to balance between my irritation and patience, because it is a patience game. And honestly, most of the days where सबसे ज़्यादा hardship face किया ना मैंने जिस दिन, and literally I'm about to give up and I'm like irritated, उस दिन मेरे को सबसे अच्छी footage मिलती है. हमेशा हुआ मेरे साथ. उसी दिन I'll get like a hunt. उसी दिन I'll get something that मेरा mind is expecting. Correct. So that's happened with me. So now over the time I have learned to be more patient. So that is very important. So Simran, you're in wildlife where you cannot have dialogue with the creatures and say thoda idhar dekho, thoda udhar dekho. Okay? They are completely unpredictable. Yeah. So how do you positively use your instinct and spirituality in shooting these beautiful creatures? So as far as wildlife is concerned, instinct do matter a lot, but also more than instinct, it matters who you've gone with. So आप जो wildlife पे जाते हैं filming करने, आप
एक रिसर्चर के साथ जाते हैं या आपका गाइड के साथ जाते हैं, उनको एक एक मूव मालूम होता है उस फॉरेस्ट में उन एनिमल्स का. So they have built a relationship. They have built a relationship and it is so beautiful, that relationship. तो जब मैं पहली बारी फॉरेस्ट में जाके फिल्मिंग करना स्टार्ट किया, it was so beautiful. Like he's like one of my guides in Ranthambore, his name is Bobby. He's like, अभी आज एरोहेड यहाँ से जाएगी, फिर उधर जाके बैठेगी, फिर इधर आएगी, 3 दिन से यही कर रही है. एंड आई वाज लाइक कि आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहे थे, तुम देखो ना. एंड वैसे लिटरली वैसे ही हो जाता था. सो इट्स अ रिलेशनशिप दे बिल्ट ओवर द इयर्स. ओके, सो आई कैन बी सिटिंग इन माई जिप्सी और इन माई बोट एंड बी लाइक दैट्स माई फेथ एंड आई कैन बी लाइक 100% आज तो मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी जब मैं ब्राज़ील गई थी तो आई वॉज मेरे साथ एक फ्रेंड था जो पहली बार जैगवार्स को देखने आया था, और वो बस ऐसे आया था, घूमने के लिए आया था, जस्ट टू ट्रैवल. And he was like, "Yaar, I want to see a hunt. I want to see a hunt. Everybody wants to see a hunt when they go to wildlife." He's like, it was the last day, and he's like, "Abhi to there's no chance. Abhi to हमें अभी तक नहीं दिखा. अभी क्या देखेगा?" And just somewhere deep, I felt कि today is the day. So I kept telling him, "No, today is the day. We will get to see a hunt." So that is maybe just faith that played a part. And you won't believe, we left at 5:30 from our hotel, and 20 minutes. वॉकी टॉकी में बोट गाय को आया इन्फॉर्मेशन कि एक जैगवार ने एक केमन पकड़ लिया है. केमन लुक्स लाइक क्रोकोडाइल. केमन पकड़ लिया है एंड हाँ फुल स्पीड उसने बोट भगाया. वी रीच एंड शी हैड किल्ड अ केमन एंड देन फुल 1 hour का शो शी गेव अस, बिकॉज वो केमन इतना बड़ा था और वो छोटी थी थोड़ी, तो वो उसको पुल कर रही है ऊपर क्लिफ पे ले जाने के लिए, टू हाइड इट. तो उसको पुल करने के लिए शी टुक 1 hour. तो वो उसके मुंह से गिर रहा है, फिर उसको पुल कर रही है, फिर गिर रहा है. एंड it was something else. It was like watching a Nat Geo documentary live right there. We were like that close. So that kind of things happen. But like I said, researchers play a very important part. The guides you go with play a very important part. They know the forest in and out. Okay, so many a times it happens that celebs, real art stars, who come on film, who come in films and on television, they know that the paparazzi is around, but they act like nahi dekha. Because they want to give candid shots. Do animals do that? It happens. So, there are times, there's certain, so, in amongst big cats, if I talk about, जो फीमेल होती है ना, आई थिंक टेरिटोरी, उनकी टेरिटरी थोड़ी कम होती है. मेल की बहुत बड़ी टेरिटरी होती है, तो मेल दिखना जंगल में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट फीमेल आपको ज़्यादा दिखती है. एंड अगर आप ये इंडिया के नेशनल पार्क्स में जाएंगे ना, तो फीमेल ना यूज टू है जिप्सी की मूवमेंट से. जिप्सी जा रही है, दे आर नॉट perturbed by it. Obviously, it's not like gypsies बहुत पास होती है. They all maintain distance, but they're not perturbed by it. Okay, so female are more. I have felt over the years that a female cat is more like okay, but a male, अगर मेल टाइगर आ गया या मेल जैगुआर आ गया, वो आपको बस स्नाल करेगा, थोड़ा सा आपको बोलेगा कि डोंट कम नियर मी, बैक ऑफ. सो वो हमने फेस किया है. बट फीमेल थोड़ी कंफर्टेबल है अराउंड ह्यूमंस, इज व्हाट आई हैव नोटिस्ड ओवर द इयर्स. एंड लाइक अभी रिसेंटली जब जैगुआर रोली, वी फाउंड अ न्यू मेल जो किसी रिसर्चर गाइड्स ने भी कभी देखा नहीं था. वो किसी और एरिया से आ गया होगा वहाँ पे, तो उसको थोड़ा पूरा दिख रहा था कि उसका कट है यहाँ पे, तो लुक लाइक उसने किसी और मेल जैगुआर के साथ फाइट हुआ है, 100% फाइट हुआ है. सो हम वन ऑफ अस स्पॉटेड इट, सो वी वर जस्ट फिल्मिंग. तो वो दूर था, वो दूर से ही स्नाल कर रहा था, तो वो वार्निंग दे रहा था कि गेट अवे. बट देयर हैव बीन टाइम्स वेयर our gypsy was under a tree, and then Arrowhead is one of my favorite tigers. Like that's why I keep giving her example. She's so beautiful. She was called the Queen of Ranthambore, but now her daughter is the Queen of Ranthambore because उसकी daughter ने उसको territory से निकाल दिया है. That is the way of nature. Like she has taken care of her daughter, but once her daughter grows up, then they have a fight over territory. So she has gone, and the daughter is now the Queen of Ranthambore. So how the reigns change even in nature, it's fascinating. So even in nature, women rock. Yeah. So then, so I remember I was filming और मेरे पास zoom lens था जो मैं आपको बता रही थी, तो मैं 100-400 पे थी, तो मैं literally पूरा zoom out किया होके 400 पे थी. तो मैं तो लेंस से देख रही हूँ, okay, and sometimes I also regret कि half the time I'm just looking through the camera and not really enjoying through my eyes, but I was looking and suddenly I see that she's coming closer and I can just see half her eye, and then I just moved and I saw she had come so close to her gypsy, and then when they have come close, you can't back off. That's going to startle her. So, but she just looked at us. She gave us that look, like gave you that literally shot.
इतना जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसे देखी और चली गई, कुछ नहीं. So I guess animals are intelligent enough to understand कि who's there to harm them and who's there not to harm them. Correct. I guess. So Simran, with this incident, I wanted to ask you, what are the safety concerns on field, So especially wildlife? okay, so I remember like just to tell you, when I told my family and friends that I'm going to I'm going to start career in wildlife at the age of 32. I'm going to start career of With that wildlife. transition. It's not impossible. So my parents were like, "Arey, will you be safe in wildlife? Animals kabhi bhi aake attack kar sakte hai." And my line to them was, "I feel safer in the jungles than I've ever felt in a city." मैं जंगल में बिल्कुल सेफ फील करती हूँ. Of course, you have to keep things in mind. You have to follow rules. Every park has rules, and even if the parks don't have rules, it's not like you can go and trouble the animals. You have to maintain distance, and that's why we have those lenses and we have those cameras where dur se also you can take shots. Correct. And you can't disturb nature. So if you're maintaining distance from them, they are not going to come and attack you. In all these years that I've been filming wildlife, I have not faced any such encounter where I'm far away and the animal is just coming to attack me. In fact, city mein us din one cow came and attacked me. I was just walking. So, so that's what I'm trying to say. And so they will never be the first one to charge at you. If they feel the threat है, तो वो करेंगे. आप अपना डिस्टेंस मेंटेन करो तो ऐसा कुछ इशू है नहीं सेफ्टी का per se. Yeah. So Simran, I know you spoke about the technical aspects of camera editing. Now, are there any institutions or schools that could be available for someone who wants to pursue their career? Okay. So like I did my mass communication and then journalism in XIC, but like I said, I learned everything on the job. Of course, I had the knowledge and idea about basic camera work, etc. And in those times, many institutions were not available. But times have changed now. Times have changed now. There's lots available. Of course, like I did speak to certain friends who are in this field just like me, and there are institutions like your FTII in Pune or SR FTII in Calcutta. Some even Shrishti School of Art and Design in Bangalore, they have a dedicated section which maybe people can look at. But these days, online YouTube, I follow this channel called Full-Time Filmmakers. They explain everything to you in such simple terms, and they use examples. They will shoot and they will tell you, okay, you want to do nature documentary, तो ऐसे कर सकते हो. You want to shoot an interview, तो these are the different formats you can shoot interview. फिर वो रिव्यूज़ करते हैं कैमरास के कि कौन सा कैमरा कैसा, लाइक अगर आपको व्लॉगिंग करनी है तो कौन सा कैमरा. इट्स अ वेरी गुड, लाइक पर्सनली आई लव following them and I learn a lot from them. And then there is an app that I have on my phone called Masterclass. You have the best of the industry people coming and teaching Speaking to you, yes. Speaking to you. They are like script writers, they are actors, they are your DOPs. So these are the few things that I continuously learn from. Correct. So yeah, these are the few things they can watch and yes, probably they can learn. watch. Sometimes it's okay to observe and learn. Yeah. Not necessarily that you need an institution to teach you certain things. I agree with you. Like what you did. Yeah, and once you are in the field on the job, you will pick up, you will learn. And there are lots of like I also teach in XIC, and my students keep telling me that we want to make our own channel. We want to start our own channel. So I tell them, phone hai, start karo. When kids tell you that we want our own channel, are they aware of the financial investment that gets into it? YouTube channel, right? Yes. Yeah. So of course, so YouTube channel, of course, just to begin because with, it's not just that you record and you upload. They know that. See, I tell them that record, because if they know how to edit, these days तो phone के ऊपर editing softwares भी हैं, तो basic editing आप कर सकते हो. But I tell them, आप basic phone पे shoot करके edit करके आप start कर सकते हो. Eventually, if you want more followers, how will you differentiate? Correct. Your storytelling has to be different. Yes. Your editing has to be different. तो वो फिर धीरे धीरे आएगा. But initially, they know, okay, थोड़ा बहुत just to encourage them. It's important that at least they start. Yes. And आपके followers ही आपके ना सबसे अच्छे critic होते हैं. Yes. वो ही आपको बता देंगे कि आपका कंटेंट काम कर रहा है कि नहीं. Feedback. Live feedback. Like they are your best critics. So I encourage them. So also filmmaking, I'm sure with making videos over phone, you also come to know the marketing aspect of it. Marketing yourself as a brand. Yeah, that's true. Now these days, having your own style to your own product. That's true.
That's true. And like even in Gypsy Tiger, when I started the channel, it was very new. YouTube pe kar rahe hain. So we also learned. Like some videos used to do very well. Some videos got no views. Correct. So we used to go back to the drawing room and be like, क्यों इसको views नहीं मिले? Then eventually I came to a conclusion that एक तो लोगों का attention span बहुत कम है online. ठीक है, उनको कुछ लंबा नहीं चाहिए. But that doesn't mean that we will not make long format content, because there are certain stories that have to be told in a long format, like especially when there are certain heartbreaking stories or NGOs doing something great for conservation for animals, तो वो 1 मिनट में नहीं बता सकते आप. तो वो उनका सेगमेंट, उनके ऑडियंस अलग होते हैं. Correct. उसमें आप भूल जाओगे मेरे को 1 मिलियन व्यूज चाहिए. आपको वो, हमारे लिए ये था कि मेरे को वो बेसिक 50,000 1 लाख व्यू भी मिल गए ना उसके ऊपर, दैट्स गुड इनफ. मीन्स कि लोग देख रहे हैं एंड उसका ऑडियंस अलग है. बट योर स्नैपी कॉन्टेंट, योर इंटरेस्टिंग फन कॉन्टेंट is where you can really get more followers. Correct. Because people are just scrolling and they want to have some fun, they want to watch something funny. So in wildlife I feel that people love अगर emotional हो, they love अगर हम कुछ funny डालें. जैसे जापान में थी तो स्नो मंकीज बहुत फनी चीज़ें करते रहते हैं. वो हॉट वाटर स्प्रिंग में होते हैं, कुछ ना कुछ करे, एक दूसरे को स्लैप करते हैं या समथिंग दे आर डूइंग. सो वी मेड कंटेंट ऑन दैट. And then and lot of cuddly stuff like mom with cubs. Yes. Like I was in Alaska where we saw a female with 3 cubs, and polar bears are so adorable. You want to like just go and hug them, but unfortunately you can't. So uske upar content, they will hug you for life. You finished then. So that kind of content did really well. So we started understanding कि लोगों को ना, like people are like had a stress comedy. Yeah, people have had a stressful day. उनको कुछ अच्छा कॉमेडी देखना है या कुछ बहुत ही something that makes them happy. So that kind of content started doing very well for us. So that experiment is there. We are in an age of content from 30 seconds to 3 hours. Yeah, you're right. And we need to survive here. Correct. So see, like your 3-hour movie also has audience and your 30 seconds. So Reels also have audience. You have to balance it. You have to see where you want your channel to go, where it's headed. Also, what are your pluses and your minuses? In what ways? Like, in what is selling, what what correct you are correct, creating. Correct. What are you master at? So honestly, in my case, so I'm very good in storytelling. So I make a lot of nature documentaries. Even the documentary that won a lot of awards was about nature and conservation, about the living root bridges in Meghalaya. I have made, and that documentary is only 4 minutes. So ऐसा नहीं है कि आप 4 मिनट में भी बता नहीं सकते हैं स्टोरी. आप बता सकते हैं, but it depends from subject to subject. Certain require longer storytelling, certain can be told in shorter format as well. So Simran, lastly, I want to ask you one advice to the aspirants. Okay, so I think the biggest thing I can tell you is that it's never too late if you want to change your career path, because I am the biggest example of that. But of course, what would you want to tell parents who who probably tell their teenagers आप ये stream में जाओ, and suddenly one fine day teenager सामने आता है, बोलता है अब मैं ये करूँगा या करूँगी. I think it's very important that parents can advise. I mean, you are grateful to your parents who allowed you, correct, who encouraged you for that switch. So parents can advise, but I think you should just let an individual decide, because he or she knows what they are talented at, where their talent lies, where their passion lies. अगर मैं 32 में वाइल्ड लाइफ में घुसी इसलिए नहीं, बिकॉज आई डेंट गिव अप ऑन माई पैशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो स्कूल टाइम से चलता आया. आई डेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी. पर ऐसा नहीं था कि मैं भूल गई और मैंने छोड़ दिया. सो आई फील बी पैशनेट, एंड वो पैशन को पकड़ कर रखो. किसी ना किसी दिन योर डोर्स विल ओपन फॉर यू. वॉट एवर फील्ड यू वॉन्ट टू एंटर, the door will open for you. Situations will get created. I strongly believe in that like they say, the universe opens doors for you if you want. Yes. So I strongly believe in that. So but my parents, I'm thankful to them that they didn't really bother. And at the age of 32 anyways, they were like, you do what you want to do. But no, but it's a big decision, right? Even when I was young and I said I wanted to be a journalist, my dad wanted me to give IAS exam. Yes. He wanted me to get into civil services. So then there was a little bit of a fight there where I said, no, I don't want to do civil services. I want to be a journalist. So, but he let me do it. He said, okay, this is what you want to do. Because there's no point being forced into something and then, you're not managing it. Yes. Just because your parents have said or your family has said it. So if you don't enjoy something, it's not going to last long. I completely believe in this. If you don't enjoy your job,
you can never be successful. Correct. You can't. You have to, of course, there are times where situations are such that you don't have an opportunity, right? I'm not talking about that. Even I didn't have an opportunity for a long time, but I enjoyed journalism that time. Now I'm loving wildlife. So that's how it is. Sometimes you have to live a phase of your life to reach the phase that you really want to live. Yeah, that's true. That is so true. On that note, Simran, this was a lovely conversation. A little piece How of sweet. nature from our Thank end you so much. to a nature-loving Such person. a beautiful gift. Thank you. And thank you for being on our show. Thank you. While you were narrating some of your experiences, especially Arrowhead, Yeah. सामने आ गया visual. Yeah. There's so many experiences because, I've traveled the whole world. I've been You traveled to all Antarctica corners. as well, right? Yeah. I went to Antarctica last year. I've been to all across. Like I've touched all continents and North and South Pole. Antarctica I was there for a month. We've had a lot of close encounters with animals, but every experience is just so special. I was with 50 people on a ship. We faced some 3 hurricanes. There was one time that the wind speed was 120 kilometers per hour. This is very funny because out of the 50 people, we were 4 Indians. And everyone is getting seasick. Because ship, honestly, is going, ऐसे जा रही थी. And the waves were very high. And we were locked inside. We couldn't even land at the 2 islands we were supposed to land and eventually film because the weather conditions. Yeah, the captain said it's impossible. So people were like, what to do now? So for 4 of us, we didn't take any medicine for seasickness, nothing. Everyone is in their cabins having the worst time of their life. But these 4 Indians are enjoying themselves, playing Ludo, playing Uno, eating whatever is there in a restaurant. So I remember one of my friends from Australia. He's like, "What do you Indians eat? What are you guys eating that you're not facing any problem?" So, but Antarctica was so amazing. It is one of the toughest places to visit. It is the windiest part of our planet. So, itna hawa chalta hai. Like, the camera was in my hand and I was just trying to put it on a tripod and the wind just threw me. So while I'm putting it on the tripod, I have fallen on the tripod. The camera has fallen on my side like that. So it's very difficult. The temperatures are like -10. That time when we went, it was -10, -15 because summer was coming. And and with all those gears to manage, I was not wearing gloves. My photographer friends who were with me, they were like, what is wrong with you? Because I could not wear gloves and do my settings and manage filming. Like even like 10 seconds and your fingers were grey. So it was like that. So I've been to the warmest parts also. I've been to the coldest parts also. Nature has taught me I'll take care of things. Yeah. That I've become a better person, I feel. Even personality wise, मैं काफी सुधर चुकी हूँ. Because nature आपको वो थोड़ा slap करता रहता है कि you are so small compared to what I am. So listening to you, I'm feeling so energetic. Thank you. I can do 3 more sessions. We should go for a national park visit together. Oh, please. I keep encouraging everyone. It's so amazing just to go there, and when you are there, one with nature, no, वो मैं describe ही नहीं कर सकती. तो इसलिए मैं जितनी भी young teens हैं, girls हैं, जिनको wildlife में जाना है, I want to encourage them. और कुछ नहीं तो ना वो पहले 2 instances जो experiences आपको मिलेंगे ना, they will be there with you for life. Can I say this one thing before we end? Yeah. I just completely forgot. Like मैं आपको बताना चाहती हूँ जब मैं wildlife में enter की, जब मेरे को opportunity मिली, मेरा सबसे पहला assignment सबसे tough था. मैं लद्दाख में थी 1.5 month के लिए अपने दूसरे crew members और friends के साथ. हम snow leopards को ढूंढने गए. बहुत difficult है उनको ढूंढना. हिमालयस आपने देखा है कितने बड़े हैं. Yes. And वो ऊपर घूमते रहते हैं, ऊपर से अपना देखते हैं, नीचे hunt करते रहते हैं. Beautiful cats. And the temperature was -20, 25. February का month था. लद्दाख में बहुत ठंड थी. हम लोग स्लीपिंग बैग्स में रहते थे और छोटे होम स्टेज में. तो होम स्टेज होते हैं जहाँ पे आपको एक बड़ा सा कमरा दे देते हैं, वो आप 5-6 लोग रह रहे हैं. एंड बेदिंग वॉज अ डिस्टेंट ड्रीम. नहाने को तो मिला ही नहीं. So what happened as a woman also, I went with full enthusiasm. I finally got an opportunity in wildlife. और जब मैं गई उधर, पहले 1 हफ्ता तो बहुत खुश थी. ये लैंडस्केप ले लिया, वो कर लिया, ये कर लिया. फिर इवेंचुअली जैसे डेज बढ़ते गए and you're realizing कि toilets is an issue because not everywhere you have basic facilities. Because जंगल है,
आपको वहाँ पे एक फैंसी टॉयलेट तो मिलने नहीं वाला है, और लद्दाख में उनके वो ड्राई टॉयलेट्स होते हैं. सो एंड और मेरे को OCD अनदर लेवल का OCD है. सो आई यूज्ड टू सर्वाइव ऑन मैगी नूडल्स. मैं पूरे दिन में एक मैगी का प्लेट खाती थी, और मैं कि मेरे को टॉयलेट ना जाना पड़े. और फिर मैं रात को 6 बजे के बाद पानी नहीं पीती थी. और हमारे गाइड्स भी हमें बोलते थे पानी मत पियो, रात को -20 डिग्रीज में बाहर जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा. सो पूरा रात देन यूज्ड टू गो लाइक दैट. सो इट स्टार्टेड गेटिंग टफ. एंड लाइक आई सेड, मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, बट आई वॉज फुल्ली चैलेंज्ड. ऐसे ऐसे हुआ कि जैसे एक महीना खत्म हुआ मेरा, मेंटली आई स्टार्टेड गेटिंग, आई वॉज एग्जॉस्टेड फिजिकली एंड मेंटली. और स्नो लेपर्ड अभी हमें दिखा नहीं था. हम हर रोज स्काउट करते थे, बाहर बैठे रहते थे घंटों लुकिंग फॉर स्नो लेपर्ड्स. सो दैट वॉज अ बिग चैलेंज. एंड एक टाइम पे मेरे माइंड में आया था कि एम आई डूइंग द राइट थिंग. लाइक एज अ वुमन आई एम गोइंग टू फेस दीज प्रॉब्लम्स इन एवरी लोकेशन. मैं सही कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, मुझे ये करना चाहिए, क्या मिल रहा है मुझे ये सब करके, ऐसे मेरे को फीलिंग आया. एंड देन 1 महीने से पेरेंट्स से बात नहीं किया था. बहुत एक्सपेंसिव था. उसने STD वो कॉल था तो उसने बोला 100 रुपीज़ पर मिनट. मैंने कहा आई डोंट केयर, आई नीड टू टॉक टू माई father. And then I called and I heard my father's voice and I started crying. And he's like, तुम रो क्यों रही है? And then I was like, I don't know if I've made the right choice. And then he said only one thing to me, beta, mind over body. And you've always wanted to do this. Just do it. And then I was like, ठीक है, कहीं तो some kind of motivation I've got. And my friends were there. And probably you just wanted to hear that. Yeah. My friends were there. They were equally going through that stress, equally going through the mental thing. So we all got together. Then we were like, we have to do it. And eventually, like I said, hard work pays. Yes. We saw snow leopard. And especially in terms of passion, yeah, बहुत दिक्कतें आती हैं. Yeah, बहुत. So it will compel you to leave. Correct. So there have been times छोड़ दूँ. Yes, पर नहीं छोड़ने का. नहीं. Don't give up. Yeah. And that's when you become a Simran Gill. Thank you. Thank you so much for being here. It was lovely speaking to you, Simran. In fact, मेरे लिए भी as a host कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें डेली रूटीन में हम इतना डीप डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं. So when she said Simran is a wildlife filmmaker, I was like, पढ़ा मैंने थोड़ा, but I was like, naturally आने चाहिए ना questions, conversation. But it doesn't feel that ki, I've never, it just felt so natural being Thank with you. Yeah, it was such a Thank good conversation. Thank you for making me comfortable. No, thank you because for making me journalist से comfortable. सवाल पूछना मतलब एक और दूसरा stress होता है. नहीं. It was such a nice conversation. Yes. Thank you so lovely much. conversation. Thank you. That's all for today's episode. और हम आपसे मिलेंगे अगले episode में. Till then, do not forget to like, share and subscribe. Ta-ta.